Hi friends, how are you doing today? And thanks for joining me for today's video in which I'm going to share the sample answer of one of the latest cue cards that you are looking for. The cue card is describe an occasion when many people were smiling or a time when you see lots of people smiling. I believe the sample answer of this cue card is definitely going to bring a smile on your face. If you watch my videos and you like my videos, do give me a thumbs up. Press the like button right now. If you are new here, do subscribe the channel and press the notification button to get the latest updates of my newly uploaded videos. In today's video, we are going to discuss the sample answer of this cue card, and the cues can be when it was, where you were, who the people were, and why they were smiling. Now, what can be the idea behind it? As usual, I'm going to discuss it in Hindi with you, and after that, I will be sharing the sample answer. Well, guys, आप कब हंसते हैं? बड़ी सिंपल सी बात है, दुनिया को दिखाने के लिए चाहे हंसते हैं या नहीं हंसते, लेकिन जब खुश होते हैं तो ऑफ कोर्स स्माइल तो मुंह पे आ ही जाती है। कुछ ऐसा चूज़ कीजिए जो बहुत रीज़नेबल और इजी लगे और एक्सप्रेस करना बहुत इजी हो जाए। बातें मैं बड़ी सिंपल करता हूँ, शायद इसीलिए आपको अच्छी भी लगती हैं। अब खुशी का मौका अगर हो तो वेडिंग से बढ़िया क्या है? वेडिंग तब जब कोई फॉरेन से आ रहा हो और आपको आ जाए इनविटेशन। कोई अमेरिका से आपका कज़न, ब्रदर या कोई भी आ रखा है, अमेरिका से कज़न या ब्रदर बोला है, कज़न ब्रदर नहीं बोला है। ये एक बहुत कॉमन इंडियन मिस्टेक है। कौन आया है? मेरा कज़न ब्रदर आया है या मेरी कज़न सिस्टर आई है। कभी भी ऐसा मत बोलना, हमेशा बोलिए कि कज़न आया है। उसके बाद जब उसके बारे में बताएंगे तो ही शी से पता चल जाएगा कि वो लड़की है या लड़का है। नेवर एवर से कज़न ब्रदर या कज़न सिस्टर। मैं कह रहा हूँ कि आपका कज़न या ब्रदर या कोई भी आया हो सकता है। और अब कितनी खुशी की बात होती है ना जब कोई फॉरेन से आया और हमें इनविटेशन दे दे। पता होता है बड़ी ग्रैंड पार्टी होने वाली है। अब जब आप गए, इतने सालों बाद वो आया, उसकी शादी के लिए आप वैसे ही बहुत खुश थे। जो वहाँ पर पहुँचे उसका पूरा फैमिली वहाँ पर था, पूरा क्लैन था। क्लैन आप समझते, पंजाबी टब्बर बोल दे। सो नाउ दिस क्लैन वाज देयर, दे वर ग्रीटिंग द पीपल हु वर कमिंग, वेयरिंग अ स्माइल ऑन देयर फेसेस। जाते ही पहले एक फ़ोटोग्राफ क्लिक होती है ना, उस पे भी ऑफ कोर्स जब कैमरा के सामने होंगे तो स्माइल तो करना ही पड़ेगा। देन एवरीवन वाज सो हैप्पी क्योंकि हम बहुत सारे अपने रिलेटिव्स को काफ़ी टाइम बाद मिल रहे थे, तो मिलने पे भी ऑब्वियसली स्माइल फेस पे आएगी, खुशी है। नाउ पार्टी में क्या क्या होता है? खाना पीना। जब इतना कुछ वैरायटी होगी, फूड होगा, तो सभी के चेहरे खिले हुए थे उस फूड की वैरायटी और ड्रिंक्स को देख के। वो खाने पीने वाले होंगे, इंपोर्टेड स्कॉच होगी तो उनकी तो एक्साइटमेंट की लेवल ही बहुत हाई हो जाएगी। अब देन यू कैन इवन टॉक अबाउट कि वहाँ पर उन्होंने एक एंटरटेनर बुलाया हुआ था, जो कि इंडियन पार्टीज़ में आम रहते हैं, म्यूजिशियंस को बुलाते हैं, लेकिन उन्होंने एक कॉमेडियन को बुलाया था। तो वहाँ पे वो कॉमेडियन अपने जोक्स के साथ भी सबको हंसा रहा था। एंड ऑफ कोर्स एज वी सेड दैट एवरीवन वाज हैप्पी फॉर माय cousin who was getting married on that day। और यहाँ पर जगह जगह पर कैमरास लगे हुए थे और कोई भी नहीं चाहता था उनकी फ़ोटो अच्छी ना आए। एंड फॉर दैट रीज़न ऑफ कोर्स उन सभी के चेहरों पर स्माइल थी। सो यू कैन से दिस वाज द टाइम। आइए देखते हैं इसका सैम्पल आंसर कैसा होना चाहिए। बट आई वुड लाइक टू tell you about my speaking booster book that you can purchase anytime from my IELTS coaching application। 30 seconds के अंदर अंदर ये बुक अनलॉक हो जाता है। इसकी ब्यूटी ये है, इलेक्ट्रॉनिक बुक है और 6 महीने तक आपके पास अनलॉक रहेगा। और जो भी IELTS एग्ज़ाम रिलेटेड, स्पीकिंग एग्ज़ाम रिलेटेड अपडेट्स रहेंगे, नए क्यू कार्ड्स, फॉलोअप्स, कुछ भी, वो आपको फ्री मिलते रहेंगे। By the end of the video, I will show you how you can purchase speaking booster. But now let's quickly check out the sample answer of this cue card. Well, the stress level is too high these days among people that you don't see them smiling much. I would like to share my experience of seeing many people smiling, and it was the occasion of my cousin's wedding. Actually, my cousin lives in America and he was here to get married, and we were invited for the evening party like others. The celebration was organized at the most expensive resort of my city, which was beautifully adorned with lights and flowers. The decoration was just breathtaking and we were really impressed. My cousin's parents were greeting all the guests with a huge smile on faces, and it was such a delightful moment as we had seen all of them after ages together. It was such a grand celebration and there were arrangements of all sorts for the guests, especially the food and drinks. The finger-licking food was bringing the smile on every face, and the imported scotch was making those who drink smile in excitement.
In addition, my cousin had also invited a famous comedian for the entertainment of the guests, who was making everyone burst into laughter with his hilarious jokes. Lastly, there were dozens of cameras all around, and to ensure that they are looking smart and cheerful, all the guests were wearing smile on their faces. In fact, that day everyone was extremely happy for the newly wedded couple, and for that reason there were smiles all around, and I found it to be the place where I saw lots of smiling faces. And that's it. So I hope you like the sample answer of this video, and in the comment section don't forget to tell me that which cue card you want me to prepare next for you, and definitely in next video I'm going to bring another sample answer. Keep on watching my video, keep on recommending the channel to your friends, and keep on sharing my video links on WhatsApp, Facebook, Insta, and wherever you can. Thanks for watching, and bye bye for now. Are you an IELTS aspirant? Are you living out of India? Are you looking forward to purchase IELTS Speaking Booster, the book containing the latest content of the IELTS speaking exam that the examiner can ask you in any part of the world? This video will demonstrate how you can purchase Speaking Booster in less than 30 seconds that would be containing the latest content of the IELTS speaking exam that the examiner can ask you during the IELTS exam, no matter where you are. To purchase Speaking Booster, even if you are not living in India, you need to download IELTS coaching application on your Android phone. If you're an Apple user, please download CLASSPLUS and enter the ORG code IELTS. To register on this application, you have to enter your email ID on which you will get the OTP, and once you register, you will see the home screen something like this. Click on Store at the bottom and then on Speaking Booster. At the bottom, you need to click on Buy Now, and once you click on it, it would prompt you to choose a state. Since you're not living in India, choose Others, as it would reflect only Indian states. And once on the payment page, you can choose debit or credit card payment option. There are few wallet and other digital payment modes as well, like Google Pay if you use that. Otherwise, simply using your debit or credit card, you can make the payment. Although the price reflects an INR, that is Indian National Rupees, still you can make the payment and the amount would be converted automatically without charging anything additional. Now waste no time and purchase Speaking Booster. The direct link of Speaking Booster ebook is also available in the description of this video that you can click now.